सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। These awards aim to promote understanding, appreciation and critique of cinema as art form. In order to develop it further, they seek to encourage the dissemination of knowledge, information on cinema and related activities among the masses through book reviews. इस श्रेणी में सर्वप्रथम है सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार और फिल्म समीक्षा की बेहतरीन योग्यता के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री दीपक दुआ। Deepak Dua's writing provides a deep insight into sensibilities of the films that he reviews. Well-researched, his columns and articles ably capture the nuances of cinema that he appraises. स्वर्ण कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है फिल्म समीक्षक दीपक दुआ को। The next award in this category, Best Book on Cinema, recipient is Shri Anirudh Bhattacharya for the book Kishore Kumar, The Ultimate Biography, being awarded the Golden Lotus for the book. नई पीढ़ी के पाठकों के लिए जाने माने गायक किशोर कुमार जी की प्रतिभा तथा फिल्म संगीत का जश्न मनाती है पुस्तक किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। बचपन से ही हम किशोरदा के गीतों को सुनकर बड़े हुए हैं। उन्हीं की जीवनी पर आधारित ये पुस्तक जिसके लिए पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, क्योंकि इस पुस्तक के सह लेखक श्री पार्थिव धर को भी स्वर्ण कमल से नवाजा जा रहा है, गोल्डन लोटस का सम्मान। इस लेखक जोड़ी ने विलक्षण प्रतिभा के धनी किशोर कुमार के जीवन के हर पहलू को बेहद सरलता से छुआ है और ये उनके जीवन की कठिन यात्रा को आसानी से समझने में भी मदद करता है। फिल्म के प्रकाशक हैं हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हार्पर कॉलिंस की ओर से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री उडियन मित्रा। आपको भी प्राप्त हो रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। HarperCollins has published some of the finest writers from the Indian subcontinent and around the world, publishing some 250 new books every year. बेस्ट राइटिंग के बाद अब कार्यक्रम का अगला पड़ाव गैर फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार। इस कैटेगरी में 4 विशेष उल्लेख समेत कुल 25 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। We begin with the special mention being presented to the producer of the Assamese film Hargila, the greater Edgerton Stock. On behalf of Pi Entertainment, Ms. Meena Mahanta will be honored with a certificate of recognition. And Dada is a wonderful example of what can happen to save this bird. The film brings to light efforts to save the greater Edgerton Stock from extinction. लुप्तप्राय ग्रेटर एडजर्टन स्टॉक को बचाने के भारत के जमीनी स्तर के प्रयासों को डॉक्यूमेंट करती है ये असमी भाषा की फिल्म हरगिला, द ग्रेटर एडजर्टन स्टॉक। विशेष उल्लेख के अंतर्गत इसी असमी फिल्म हरगिला द ग्रेटर एडजर्टन स्टॉक के निर्देशक श्री पार्था सारथी महंत भी प्राप्त कर रहे हैं प्रमाण पत्र। Dr. Partha Sarathy is a police officer and social worker with over 30 years of service. Excels in various fields, including arts, literature, and cinema. The third award of this category is conferred on the Assamese film Birubala Witch to Padma Shri to Amy Barua Production Society, Ms. Mala Barua being awarded with a certificate. A
বাইদেউ যেতিয়া 2005 চনৰ 29 জুনৰ দিনা তেওঁ বিশ্ব শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে বিৰোধলৈ আমি এটা সজাগ সচেতন হিচাপে মানে কৰিব লাগে सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाले बीरूबाला राभा के जीवन पर रोशनी डालती है ये फिल्म बीरूबाला विच टू पद्मश्री। इसी असमी फिल्म की निर्देशिका मिस एमी बरुआ को भी इनकी कृति के लिए विशेष उल्लेख के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। The film highlights Birubala Rabha's courage and determination to single-handedly fight the scourge of witch hunting in rural Assam. पद्मश्री का सम्मान प्राप्त बीरूबाला का जीवन आज सबके लिए है एक मिसाल जिस पर आधारित है ये फिल्म जिसे पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी का अगला अवार्ड बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश की फिल्म मोनो नो आवारे को प्रदान किया जा रहा है। बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर श्री कौशिक सरकार प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The film is recognized for the sensitive portrayal of events leading to acceptance of loss and impermanence of life as seen through the eyes of a child. Moving on, ladies and gentlemen, for the best narration voiceover, Shri Suman Shinde is being awarded with Silver Lotus for the Marathi film Murmurs of the Jungle. गोष्ट ऐक, तुझ्या आजूबाजूचा आवाज ऐक, काय सांगते देवी? The voiceover connects the emotions so very delicately, effectively to the mysterious intonations and oral textures. जंगल भी बोलता है और कैसे उसे अपनी फिल्म में प्रदर्शित किया है इसी को प्रदर्शित करती ये फिल्म और अब गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार। और ये बेहद खास है क्योंकि फिल्म फुर्सत के लिए अपने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में संगीत निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज के नाम रजत कमल का सम्मान। The film Fursat presents a dramatic musical soundscape infusing fantasy into a futuristic narrative. The next award is for Best Editing, being presented to Shri Suresh Aras for Kannada film Madhyantar, being awarded with Silver Lotus. You pick the time. The editor excels in creating an engaging narrative through the use of effective shot selection, rhythmic flow, and admirable pace. कहते हैं फिल्म एडिट टेबल पर बनती या बिगड़ती है और ये फिल्म कितनी खूबसूरत बनी इसीलिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। Moving on, the next award is Best Sound Design, being श्री मानस चौधरी ने कहानी में पीड़ा व्यक्त करने के लिए शानदार सोनिक्स के साथ न्यूनतम ध्वनि का उपयोग करते हुए जो साउंड डिजाइन किया उसी के लिए वे हासिल कर रहे हैं इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। जोरदार तालियां हो जाएं। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म मोनो नो आवारे के सिनेमेटोग्राफर श्री सिद्धार्थ दीवान को रजत कमल से नवाजा जा रहा है। फिल्म में एक बच्चे की आंखों देखी घटनाओं के संवेदनशील चित्रण के लिए ही श्री सिद्धार्थ दीवान ने हासिल किया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान।
और मान्यवर गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस का सम्मान प्राप्त कर रही है फिल्म फ्रॉम द शैडोज की निर्देशिका मिस मिरियम चांदी मेनाचेरी। The average age of a girl getting trafficked has dropped from 16 to 12. ये ना आपके घर घर जाएंगे और तो एमडी बाबा छाड़ दिले वहाँ। एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म लापता लड़कियों की खोज के लिए किए गए कई अथक प्रयासों और मानसिक संघर्षों को संवेदनशील रूप से चित्रित करने के लिए ही मिस मिरियम चांदी मेनाचेरी के लिए जोरदार तालियां। And taking the awards further, the next award, Best Short Film, being presented to HM Production for the film Sunyota in Assamese. On behalf of HM Production, Shri Hiranmoy Gogoi will receive the Silver Lotus. सुन्योटा यानी शून्य, बिना बातचीत के, बिना इंटेंस इमोशंस को प्रदर्शित किए ही दुख की अनकही बारीकियों को छूती है ये फिल्म सुन्योटा। For the same film, Sunyota in Assamese, director Navapan Deka being awarded with the Silver Lotus. The film is a poignant and moving portrait of love and loss, subtly uses shades of grey silences to explore the turmoil in a life resigned to fate. किसी अपने को खोने का गम, अपने से दूर जाने का गम प्रदर्शित करती ये फिल्म। और मान्यवर इस श्रेणी में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है जेबी प्रोडक्शंस की साइलेंट फिल्म अ कोकोनट ट्री। जेबी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री रॉबिन्सन थॉमस। आप पा रहे हैं रजत कमल। इस फिल्म में शब्द नहीं बोलते बल्कि रंग बोलते हैं, स्केचेस बोलते हैं जिनमें रंग भरती है ध्वनि, म्यूजिक, और ये बता रही है एक पेड़ की कहानी और कैसे मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है ये। इस फिल्म के निर्देशक और एनिमेटर श्री जोशी बेनेडिक्ट को भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। The film is recognized for bold use of colors, sketches and timing along with stylized animation techniques. कई बार बहुत गहन विषय को बहुत साधारण तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है जो हमारे हृदय को भी स्पर्श करे। इसी का उदाहरण देती है ये फिल्म द कोकोनट ट्री। Distinguished guests, let's take the journey forward. The next award is for the best non-feature film promoting social and environmental values, goes to the English film On the Brink Season 2, Ghariyal. On behalf of People and the Habitats Trust, Ms. Roshni Nadar Malhotra will receive a Silver Lotus. What they discover may be the key to this extraordinary reptile's survival. अगर पर्यावरण को लेकर आप भी गंभीर हैं तो ये फिल्म आपके लिए भी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती ये फिल्म न केवल घड़ियाल पर ही केंद्रित है बल्कि भारत भर में विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा पर भी रोशनी डालती है। एक अत्यंत गंभीर विषय जिसे लेकर हम सबको सतर्क होने की जरूरत है। And for the same film, director Ms. Akanksha Sood Singh is been awarded with Silver Lotus. The film recognized for chronicling the journey of lesser-known crocodilian species, as we know, Ghariyal, through the everyday effort of the unsung heroes. Shall we put our hands together for the filmmaker?
और अब बात बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार की, और इसके लिए मराठी फिल्म मर्मर्स ऑफ द जंगल को चयनित किया गया है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सोहेल अभिजीत वैद्य को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। गोष्ट ऐक, तुझ्या आजूबाजूचा आवाज ऐक, काय सांगते ती? You could hear the manner in which the sounds of jungle were recreated as whispering trees pass down stories of gods and ancestors. A visual poetry unfolds, offering a masterfully crafted piece of new age storytelling. कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा। निर्माता श्री सागर पुराणिक को रजत कमल। ಅದು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? Celebrating the beauty of India's culture, the film is a well-researched study of the temple dance traditions of Karnataka. और इसी कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा के निर्देशक श्री सुनील पुराणिक को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है। The filmmakers being awarded for showcasing creativity and cultural heritage of Karnataka to exceptional depths. Shall we put our hands together for the filmmakers on the stage? और मान्यवर, कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म वारसा का भी चयन किया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सचिन बाला साहेब सूर्यवंशी को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। ही युद्धकला जिवंत राहावी म्हणून काठीने सराव सुरू केला। The fascinating film Varsa highlights the traditional martial arts and the manner in which these skills are transferred through generations. महाराष्ट्र की संस्कृति को प्रदर्शित करती ये फिल्म वारसा। For the best biographical historical reconstruction compilation film, Marathi film Anki Ek Mohenjo-daro being awarded on behalf of producer the Goa Studio and Ashok Rane Production, Shri Rajesh R. Bednekar to receive the Silver Lotus. सुरू होते पहिली पाळी मोठ्या डौलाते सापखिरी गरगरा मला कामगार पुस्तक फ्री करतात म्हणजे गेली कामगार गेल्याबरोबर फिल्म आणखी एक मोहनजोदाड़ो जो मुंबई के गिरणगांव की कहानी प्रस्तुत करती है। गिरणगांव वो क्षेत्र जहां मिल मजदूर रहते हैं, और इस फिल्म में आपने मिल मजदूरों की ही आवाज को प्रस्तुत किया है। एक डॉक्यूमेंट्री है आणखी एक मोहनजोदाड़ो। And for the same film, director Shri Ashok Rane being awarded with the Silver Lotus. फिल्म के निर्देशक श्री अशोक राणे ने गिरणगांव मिल मजदूरों की मुंबई के लोकाचार को जीवित रखने में उनके योगदान को प्रस्तुत करते हुए हासिल किया है अपना चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां। और अब निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ा फिल्म मध्यांतर के लिए निर्देशक श्री बस्ती दिनेश शेनॉय को स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस से नवाजा जा रहा है। The film, ladies and gentlemen, is recognized for the exceptional command over dialogue and visual storytelling in the short film format. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री बस्ती दिनेश शेनॉय। On to our next award. Award for the best non-feature film goes to Hindi and Urdu film Aina. Producer and director Shri Siddhant Sareen receiving
The Golden Lotus. अगर उस टाइम वॉश हो जाता तो मतलब मेरी आई का विजन बच जाता. कैसे लोग हैं यार. करुणा और संवेदनशीलता के साथ सुनाई गई जीवन संघर्ष की कहानी है फिल्म आईना. धैर्य और दृढ़ता की एक सहानुभूतिपूर्ण कहानी जो देखने वाले के हृदय को स्पर्श करती है. Thank you, Honorable President and distinguished guests. The award ceremony has just begun. For now, I would request Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, to address the gathering. Honorable President of India, Madam Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sri Ashwini Vaishnav ji, Sri Sanjay Jaji ji, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Dada Sahib Phalke Award winner Sri Mithun Chakravarti ji, juries, chairpersons, members, all award winners, media persons, namaste, vanakkam to you all. Today it is an immense privilege to stand here on the occasion of the 70th National Film Awards, which undoubtedly is one of the most prestigious film award in India. This National Film Awards, first of all, I congratulate to the juries how they dedicated and how they are worked, tireless work, and they identified the real talents here, so that the talent people are awarded here. And the National Film Awards have always been beacon of excellence, recognizing outstanding contributions across various aspects of filmmaking and honoring the diversity that defines Indian cinema. I want to mention a few words about our Mithun Chakravarti ji. I would like to extend my heartfelt congratulations to Mithun Chakravarti ji as an alumnus of FITT Pune. It is in our INB Institute. And last year I visited Tashkent. In the Tashkent streets, the people are dancing Jimmy Jimmy. So how he is famous in the out of country. So I congratulate once again Mithun Chakravarti ji. Our Indian cinema is how now is emerging in a global. Our Indian cinema is playing a major role in the world cinema now. Particularly the South Indian cinemas, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. So these movies now tremendously, they are doing very hard work, and the movies are not only the regional movies, the movies are pan-India movies, the movies are the world-level movies. Last year, few of movies went for the Oscar awards from South Indian movies. So I don't want to mention the South Indian, because of the regional movies, how they are playing a major role. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji's vision and our Minister, Shri Ashwin Vaishnav ji's guidance, our department brought, we want to be product to the producers. So for that, our ministry brought an amendment in Cinematography Act after 40 years to protect from the
piracy. So this is a help to the business and ease of doing business and the cinema industry. Today is the AVGC sector is transforming from the industry as a multi-billion-dollar global industry. We have seen how the VFS are using these nowadays new cinemas. For that, our government of India, our ministry is going to establish a national center for excellence for AVGC in Mumbai. It is a world-class, our institute is going to come. And also, we are in this all broadcasting medias, whether it is in traditional media, whether it is in cinema, whether it is in AVGC, whether it is in satellite. So we want to bring up one umbrella. So for that, a WAVES conference, world level summit is going to happen in this year. So for the promotion of the industry, for the promotion of the sector, media and entertainment sector. So this summit is going to help as a creator economy in our country. And is the Film Facilitation Office is promoting co-production in India, and our government, our Prime Minister's guidance and our Sri Ashwin Vaishnaviji's, the Indian cinema in this media and entertainment sector is leading the sector. Once again, I congratulate to each and every award winners to their remarkable achievements. Your contribution continue to push the boundaries of Indian cinema, making it an industry that we can all take pride in. Today's celebration will serve as a reminder of the power of cinema to inspire, challenge, and entertain. Let us all celebrate the nature of the art of filmmaking, ensure that Indian cinema reaches new heights while staying true of its roots. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Dr. Murugan. Ladies and gentlemen, we now move on to the next category of film awards. May I now invite and request Honorable President Srimati Draupadi Murmu and the dignitaries to come forward for the remaining awards, please. मान्यवर, कार्यक्रम के इस पड़ाव में फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आरंभ विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन के साथ मलयालम भाषा की फिल्म कदिकन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं श्री संजॉय सलील चौधरी। വിളക്ക് ഞാൻ കെടുത്തിയാൽ മുതന്നോ ഇടയുന്നു. और ज्यूरी की ओर से ये स्पेशल मेंशन है इस फिल्म के लिए प्रयोग की गई धुनों के लिए। फिल्म में गैर परंपरागत नवीन धुन रचने के साथ ये उम्मीद जगाते हैं कि धुनें अभी जिंदा हैं। और हिंदी फिल्म गुलमोहर के लिए अपनी अभिनय कला के लिए विशेष उल्लेख का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं जाने माने अभिनेता श्री मनोज वाजपेयी। जाने कब हम सबने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। Manoj Vajpayee displays skilled precision to showcase all the hidden aspects of human emotions, making the character come alive, a part to remember. Best feature film in language other than English, Schedule of the Constitution, for the best Tiva film, producer and director Dr. Bobby Sarma Barwa being awarded with Silver Lotus for the film Sikesal. In the film, the dream to educate the people in a remote village of Ulukunchi becomes the purpose of life of a retired primary school teacher. Shall we put our hands together for the filmmaker? और स्पेशल मेंशन से आगे बढ़ते हुए फीचर फिल्म श्रेणी में अब सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2। फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स LLP,
एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री LLP की तरफ से श्री अभिषेक अग्रवाल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। ఈ కార్యానికి వైద్యుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఎంచుకున్న ఇది మైథాలజీ కాదు, హిస్టరీ. The film is a masterful blend of religion and science, delivering a captivating mythical thriller that stands out in Telugu cinema. तो सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 और इसी फिल्म के निर्देशक श्री चंदू मोंदेती भी प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। धर्म और विज्ञान का कुशल समागम प्रस्तुत करती है ये फिल्म को एक ऐसी बांध कर रखने वाली थ्रिलर का रूप देता है इनका ये कला जो तेलुगु सिनेमा में अनोखा है, और इसी के लिए ये प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 को जाता है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार। फिल्म के निर्माता मद्रास टॉकीज एंड लाइका प्रोडक्शंस की तरफ से जाने माने एंटरप्रेन्योर और फिल्म प्रोड्यूसर श्री सुभास्करन अलीराजा को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। ஆதித்த கரிகாலன் இந்த நேரமும் படையுடன் வரலாம். குந்தவை ஒரு ஒற்றை. The film delves into the life and times of the Chola dynasty with tremendous visual appeal and emotional drama. And for Ponniyin Selvan Part 1, producer and director Shri Mani Ratnam being awarded with Silver Lotus. चोल राजवंश की जीत पर भावनात्मकता और दृश्य की भव्यता को बेहद ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित श्री मणिरत्नम ग्रहण कर रहे हैं अपना 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जोरदार तालियां। और अब सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती प्रोड्यूसर जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री रविंद्र नारायण रजत कमल प्राप्त कर रहे हैं। मेरा होना ना होना जरूरी नहीं, जरूरी है आजादी के जज्बे का दुखते रहना। A slice of history and literature depicting the freedom struggle of our motherland. पंजाबी फिल्म बागी दीती जो देशभक्ति से ही जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करती है, और फिल्म के निर्देशक Director of the film Shri Mukesh Gautam also being awarded with Silver Lotus. सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती जो आजादी के संग्राम में गदर आंदोलन में एक 14 वर्षीय लड़की की हिम्मत की सम्मोहक कहानी प्रस्तुत करती है। सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के तौर पर फिल्म दमन को पुरस्कृत किया जा रहा है। जेपी मोशन पिक्चर्स के श्री दीपेंद्र समल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। आपण मैंने ये खाली ड्यूटी करने आसे ये लोक मान जीवन बचाऊँ आ लोक मान सुरक्षित शुणा गले The film Daman deals with the malaria eradication program in the inaccessible tribal areas of Orissa. और फिल्म के निर्देशक श्री विशाल मौर्य को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है। फिल्म का टाइटल है दमन, दमन यानी दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, जो ओडिशा के दुर्गम नक्सल बाहुल्य आदिवासी अंचल मलकानगिरी में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से ही संबंधित है। और फिल्म के निर्देशक श्री देवी प्रसाद लेंका को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। Through the character of Dr. Siddharth, the film captures the challenge of development intervention in the remote Malkangiri, Odisha. किसी भी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में जब इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन पर फिल्मकार की नजर पड़ती है तो जाहिर है फिल्म पाती है इस तरह के पुरस्कार। और मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर उर्वशी थिएटर्स की फिल्म
सऊदी वेलाफ का CC.225/2009 का चयन किया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री संदीप सेनन, जिन्हें रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, the thought-provoking film dramatizes the pendency of cases in Indian courts, makes an earnest call for reforms of the responsive justice system. Shall we put our hands together for the filmmaker on the stage? फिल्म के निर्देशक श्री तरुण मूर्ति भी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। भारतीय अदालतों में लंबित मामलों पर एक गहन और बांध कर रखने वाली फिल्म है ये, जो संवेदनशील न्याय प्रणाली का भी आह्वान करती है। एक बार जोरदार तालियां। Moving on to the award for the best Kannada film goes to KGF Chapter 2, Srimati Shailaja Vijay receiving Silver Lotus on behalf of producer Hombale Films LLP. Colonel, he is the biggest businessman. This is the biggest national issue. KGF 2 involves a battle, as we know, among numerous gangs for possession of a vast collection of wealth. एक पीरियड एक्शन फिल्म है ये, जिसे इसकी असाधारण कल्पना और अविश्वसनीय तकनीकी बारीकियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रही है फिल्म गुलमोहर। फिल्म के निर्माता स्टार स्टूडियोज, ऑटोनॉमस वर्क एंड चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट की तरफ से श्री विक्रम दुग्गल रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं। क्या हुआ? कैब के लिए वेट कर रहा हूँ। आजा, छोड़ देना, मीटिंग में ऐसे ही जाते हो। तो मैं पहनता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है आपको। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर हमारे वर्तमान समाज की संवेदनाओं के साथ साथ रिश्तों को भी गहराई से प्रदर्शित करती है। फिल्म गुलमोहर के लिए जोरदार तालियां। The next award, Best Hindi Film and Best Screenplay, being given to director and dialogue writer Shri Rahul V. Chittala for Hindi film Gulmohar again, receiving the Silver Lotus. तो फिल्म गुलमोहर जिसको जा रहा है ये दूसरा पुरस्कार, और ये फिल्म अपने संवादों से विशेष छाप भी छोड़ती है। इसमें लेखक हर किरदार को अभिव्यक्त होने के उचित अवसर देता है। फिल्म के डायलॉग्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हम सभी जानते हैं, और गुलमोहर भी इसका एक उदाहरण। The award for the best Bengali film given to Kaveri Antardan, Shri Surinder Singh receiving Silver Lotus on behalf of Surinder Films Private Limited. নিরুদ্দেশ তাকে নিয়ে আমরা এইসব আলোচনা নাই বা করলাম। আলোচনা থেকে সরকার কি কোনো সুস্থ লক্ষণ পায় না? उथल पुथल भरे समय को संवेदनशील तरीके से दिखाने और अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही श्री सुरेंद्र सिंह प्राप्त कर रहे हैं ये सम्मान। कर रहे हैं श्री सुनील कुमार अग्रवाल। हानि फाले पूरी का पूरी फॉर्म होता तो पूनू मास होत नाय। मानवीय महत्वाकांक्षाओं और उनकी पूर्ति की जटिल प्रवृत्ति पर इसकी शानदार कथा के लिए फिल्म एमुति पुथी है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म। और फिल्म के निर्देशक मिस कुलानंदिनी महंत को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। As we put our hands together for the filmmaker, there's a film that recognizes and is being awarded for its brilliant narrative, complex nature of human ambition and fulfillment. And the award for the Best Action Direction Award being given to stunt choreographer Shri Anbumani MM and Shri Arivumani MM, receiving Silver Lotus for Kannada film KGF Chapter 2, Shri Anbumani MM receiving
The Silver Lotus. एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसमें भावनात्मक पक्ष पर भी जोर दिया गया। फिल्म का प्लस पॉइंट है स्टंट कोरियोग्राफी। And now for KGF chapter 2, Shri Arvimani MM receiving the Silver Lotus. Shall we put our hands together? Ladies and gentlemen, the film sets a new benchmark for action cinema with its meticulously crafted sequences that are both exhilarating and visually stunning. The Best Choreography Award being given to choreographer Shri Satish Krishnan, receiving Silver Lotus for the Tamil film Tiruchitram Balam. For portraying conversations through elegant choreography without either glorifying or losing the sense of the characters. सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर के तौर पर श्री जयकर आरुद्रा को हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल से नवाजा जा रहा है। प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। To the breathtaking visual effects, Brahmastra tells the story of a young man, Shiva, and his mission to protect a weapon of enormous energy from dark forces. और इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर श्री विरल ठक्कर को भी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल का सम्मान। As we put our hands together, the film recognized for creating a utopian multiverse that seamlessly blends Indian epics and mythology together. और इसी टीम के श्री नीलेश गोरे सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर के तौर पर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। फिल्म में बेहतरीन विजुअल इफेक्ट से एक आदर्श मल्टीवर्स यानी ब्रह्मांड की रचना की गई, जिसमें भारतीय महाकाव्य और पौराणिक कथाओं को भी निर्बाध तरीके से जोड़ा गया। An award for the Best Lyrics Award being given to lyricist Shri Naushad Sadar Khan for receiving Silver Lotus for Haryanvi film Fauja. गीतकार नौशाद सदर खान ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों के जज्बे को अपने गीत में शब्दों के माध्यम से बखूबी पिरोया है। On to the next much awaited award for the Best Music Direction Background Score goes to Shri A.R. Rahman, receiving Silver Lotus for the film Ponniyin Selvan Part 1 in Tamil. Visionary Indian composer presents an audacious blend of traditional contemporary musical styles that suspense audiences in a continuous state of mystery and adventure. And that's not saying enough for Shri A.R. Rahman. A.R. Rahman के लिए ये 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जोरदार तालियां। Award now for the Best Music Direction Songs being presented to Shri Preetham, receiving Silver Lotus for the film Brahmastra Part 1 Shiva in Hindi. मौलिक रचना, शानदार संगीत और युवाओं को जोड़ने वाली आधुनिक शैली का संगीत, श्री प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले लेखन के लिए हिंदी फिल्म गुलमोहर की डायलॉग राइटर मिस अर्पिता मुखर्जी को रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। तो मंजिलों का घर तो बन गया, कमरे भी बढ़ गए, पर इस एक घर में न जाने कब हम
special mark with its dialogues that reverberate with intangible silences to make up an extraordinary world. फिल्म गुलमोहर के नाम ये तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण। और अब मैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री जी। Namaskar. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, my colleague Minister Dr. L. Murugan ji, Secretary Jaju ji, Chairpersons of the juries, Shri Rahul Ravel ji, Shri Neelamadhav Panda ji, Shri Gangadhar Mudliyar ji, Dada Saheb Phalke Awardee, हम सब के चहेते मिथुनदा, jury members, all the award winners, friends from the media, and esteemed guests. There are so many famous personalities sitting here. How many can I acknowledge? मैं प्रयास करता हूँ करण भाई का, I acknowledge you, I acknowledge प्रसून भाई, प्रसून जोशी जी, शर्मिला जी, मणिरत्नम जी, रहमान जी, Vajpayee ji. There are so many of the stars present here. I welcome you all to this great National Film Award ceremony. It's truly an honor to be a part of this prestigious National Film Award ceremony. My heartfelt congratulations to all the award winners, artists, technicians, and all stakeholders in the film industry. You have made outstanding contributions to the world of entertainment. And special thanks to the members of the jury, esteemed members who ran a very objective selection process. My heartfelt congratulations to Mithunda for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. You have made extraordinary contributions to cinema. Your contribution to society and your role as Member of Parliament are all exemplary. You are truly an icon for our society, both on the screen and off the screen. These National Film Awards celebrate the hard work and brilliance of filmmakers. Every exceptional film is the result of great teamwork. It involves actors, directors, cinematographers, VFX artists, sound designers, editors, and many more stakeholders. This collective effort creates the magic of cinema. Many of the films honored today were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. 9 debut directors are recognized for their bold storytelling. Our young innovators, whether in the film industry or startups, are driving the creative ecosystem. और साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी को पहचाना और रिकॉग्नाइज किया। और अभी कुछ ही महीनों पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी की थी दिल्ली में, जिसमें जो नए क्रिएटर्स हैं, जो एक नए तरीके से दुनिया में भारत की एक नई पहचान बना रहे हैं, भारत के कल्चर को, म्यूजिक को, फूड को, बहुत सारे अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस को जो दिखा रहे हैं, उन सब क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान दिया था कुछ ही महीनों पहले। और मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहूंगा कि मोदी जी की सरकार और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का,
उस डाइवर्स टैलेंट को, उस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, इस क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए सबसे पहला वेव्स अवार्ड कुछ ही महीनों बाद में दिया जाएगा। उसकी सारी डिटेलिंग आप सबके सामने रखी जाएगी और इसके लिए जो 25 चैलेंजेस लॉन्च किए गए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। बाय नाउ मोर देन 5,000 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी registered for participation in the Creators Economy Challenges launched for Waves program. We also understand the employment potential of this new economy. इस नई Creators Economy की जो rails हैं, these rails have been set up in the Digital India program. The rollout of 5G, the rollout of fiber, the way our technology journey has happened in the last 10 years, that has set the big rails for very strong rails for this new economy. And now the soft skills will be set up in a very innovative way. Just recently, Honorable Prime Minister approved the first National Center of Excellence. Imagine our entire technical ecosystem was created by institutions like IITs, IIITs. Our managerial ecosystem was created using the IIMs. These are the institutions which have developed some of the finest technical and managerial talent in the world. Many of these talented alumni of IITs are leading global companies like Google, like Microsoft, and now we need to create similar institutions for the creative economy. So we will be launching the first Indian Institute of Creative Technology, IICT. And where else should it be except Mumbai? It has to be in Mumbai, right? Amchi, Mumbai. That's the cultural capital. That's where the creative energies are so well established. That's where the first IICT will be established. The Maharashtra government has already given land for it. The lease agreement is under signature by the Secretary of INB Ministry and the Maharashtra government. So very soon the first IICT will be started, and like many IITs that have created a great educational ecosystem for the country, there will be many IICTs throughout the country, which will be like IITs, like IIITs, like IIMs, and like AIMS. They will be the centers of excellence. They will create the talent pool which will serve not only our country, but also win over the media and entertainment world throughout the world, throughout the globe. Friends, our government is working on developing the film industry with a three-pronged approach. The first approach is talent development. And we know the world is changing very fast. We need talent. I watched the movie Kantara. So much technology is used in it, right? I watched the movie RRR. It's like movie which is driven by technologies, which is driven by creative technologies. So this is the latest trend. I'm told, I'm new to I understand the film industry very little. So my friends and the professionals tell me that today practically 40% of a movie is technology, creative technology behind it. So let's create a talent pool. Let's create a talent pipeline which becomes the best talent in the world, like our semiconductor talent, like our IT talent, like our design talent. Similar talent we create in the film industry. So first pillar of our strategy is creating a very strong talent pipeline. So talent is the first pool, first pillar, first prong of our strategy. And IICTs will play a very big role in that. The second pillar is infrastructure. We all know that creating a good film, developing that magic, requires a very different type of infrastructure. And we have seen the power of some of the old and very
prestigious film studios which created wonderful movies in the gone by years. Time has come when we create a new infrastructure which can be equated with the best in the world. And that is the second challenge we have taken as part of our strategy. And I will request the entire industry, the stalwarts of this industry, to come forward, give your ideas, share your thoughts, help us design a new infrastructure which will really create a foundation for a very vibrant film industry in the coming years. The third pillar is all about simplification. The third pillar of this strategy is about simplification. You have seen how much simplification has happened in the business world, in so many different sectors. Now time has come when somebody who wants to do a film, make a film on using railway as the background or some very nice archives or some nice archaeological places in the background or some forest in the background, the permissions must become very simple. The permissions must become simple. It must become very easy for the creative economy community to be able to go out and set up the sets and start weaving that magic. So the third big focus will be about creating structures, creating institutions which help you get all the permissions in a very simple way. So developing talent, developing infrastructure and simplifying the processes. These will be the three pillars around which we will develop the film industry, and we are very open-minded government. We request all of you to please come forward with your ideas and thoughts, and we'll work together, friends. Finally, I would like to say film heritage and many of the films which were created in the past, we really need to preserve it. So recently we had a very interesting, very important meeting in Mumbai, and we have taken some very important decisions. Prasun Bhai was part of that meeting. We have taken those decisions to make sure that each and every part of our heritage is very well preserved. The films, the posters, the equipment which were used and in those times, the newspaper clippings which came during those times, we must preserve all that, because that's a very valuable treasure which cannot be created again. We'll create new heritage, but we must protect what we have already created. So friends, with these words, I would like to once again congratulate all the winners, and I request the film, media and entertainment world to come together and work with us. Together, we will take our media and entertainment industry to new heights. The blend of tradition and modern storytelling will keep our culture thriving and inspire the generations to come. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, friends, taking the special evening forward, I once again request Honorable President and distinguished guests to come forward so to confer the next set of awards for feature film category. The award for the best makeup goes to Shri Somnath Kundu for the Bengali film Aparajito, receiving the Silver Lotus. You can see in the visuals an inspired and imaginative makeup that brings characters come alive on screens. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the artist. प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए मशहूर श्री सोमनाथ का ये पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस निकी जोशी। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए आप प्राप्त कर रही हैं रजत कमल का सम्मान। ये स्टोरी नहीं खबर था मैंने। बढ़ते हूँ चलाओ। हाँ भाई। આ ભાઈઓનું કામ નહીં। એ બુલેટ તને ખબર પડે? Kutch
Express has taken great care to incorporate the minute intricacies of the folk world of Gujarat in its costumes. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार बंगाली फिल्म अपराजितों के लिए श्री आनंद आध्या को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। We have never seen a movie like this. In the film, you witness a lifelike ambience and meticulous handling of various visual components that bring the era alive on screen. जीवंत माहौल विभिन्न दृश्य और तत्वों के कुशल प्रबंधन के लिए पर्दे पर उस युग को जीवंत करते हैं। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का अवार्ड मिल रहा है मलयालम फिल्म आटम को। श्री महेश भुवनेन्द्र प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The remarkable use of silences and its control over the film space at the same time shows the maturity of the editor in the film. मान्यवर बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 चयनित की गई है और साउंड डिजाइनर श्री आनंद कृष्णमूर्ति रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। मौन का साइलेंस का कुशल समन्वय चोल साम्राज्य को जीवंत कर देता है। फिल्म ने वर्ष 2022 की लिस्ट में सबसे अधिक 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। The award for the best cinematography goes to Sri Ravi Varman for the film Ponniyin Selvan Part 1, being awarded with Silver Lotus.